Hello class, welcome back. Welcome back to your maths class. So now kids, in our last class we have already completed that chapter measurement of length. Okay, that we have completed. Now today we have to start a new chapter, that is measurement of weight. But before moving toward that chapter, let us discuss some of the things. Now as you can read on the board, I have written something. What I have written? Heavier and lighter. I have written heavier and lighter. Now see. This is what? This is a brick. This is a brick. Okay. And now this is a flower. So see, this is a brick and this is a flower. Now tell me, between these two things, which of the thing is heavier and which is lighter? Heavier and lighter. Heavier means क्या? भारी. कौन सा सामान क्या है? भारी. And lighter means हल्का. So tell me, if I am having brick and a flower, if I have these two things with me, brick and flower. Okay. Now, which of these is heavier and which of these is lighter? Okay. Now see. As you know, brick means what? ईटा, है ना? And you use brick in making houses. We use brick in making houses. So brick is what? Brick is very heavy. Brick is very heavy, है ना? So which of these things is heavy? Brick is what? Brick is heavy. And flower is what? Light in weight. Flower is what? Flower is light. Brick is heavy. Flower is light. ठीक है? Got these two things? Now, next thing that we have to read, brick and flower. Now let us take one more thing. Now, next thing we are going to take is, okay, what is this? This is a mango, and this is what? These are what? These are raisins. These are raisins. And this is what? Mango. Now tell me, which of these things is heavier and which is lighter? Raisin means what? Kismis. है ना? Raisin means what? Kismis. So now tell me, mango is heavier or raisins are heavier? One full size mango or one raisin? Chalo. To avoid confusion, let us take only one raisin. This is raisin. Raisin means what? Kismis. Okay. Now tell me, mango is heavier or raisin? Which of these things are heavier? Mango is heavier. Mango is what? Mango is heavier than raisin. This is what? This is heavier than
रेजिन। क्यों? रेजिन छोटे छोटे होते हैं। रेजिन क्या होते हैं? रेजिन लाइट इन वेट होते हैं। दैट्स व्हाई रेजिन्स आर व्हाट? रेजिन्स आर lighter in weight and mangoes are heavier in weight. So whenever we use term weight, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? We are measuring weight. यहाँ पे we are measuring weight by observation. We are measuring weight by observation. Okay. Now let us take few more example. Now tell me. Here I am having a chalk in my hand. Here I am having a chalk in my hand, and on the second side I am having a book. A chalk and a book. Chalk and book. Which is heavier? Chalk या book? कौन सा heavy है? Tell me by observation. कुछ भी मेजर करने की जरूरत नहीं, आप खाली मुझे मेजरमेंट करके बताइए। Book is heavier, chalk is very light, and this book is what? This book is heavier. That means what happened? Book is heavier in comparison to chalk. है ना? Book क्या है? Heavy है. Got it? Now let us take few more example. Now I am having this marker in my hand. Okay, and next I am having this hammer. Now tell me, marker or hammer? Now I am having a marker and a hammer. ठीक है, I am having a marker and a hammer. So now tell me, here I am having a marker and a hammer. Now tell me, which of these is heavier and which of these is lighter? So you can say by observation only that this marker is lighter and this hammer is very heavy. Yes, it is very heavy. It is difficult to hold. है ना? So that means what happened? Marker is lighter than hammer, or hammer is heavier than marker. Okay. Now let us move toward the next thing. Okay. Now here I am having, what are these? Let me draw first. Okay, not draw. See. Tomato and pumpkin. Tomato and pumpkin. Now tell me, tomato is heavier or pumpkin is heavier? Which is heavier? Tomato or pumpkin? Which of these is heavier? Pumpkin. Always pumpkin. Pumpkin कैसा होता है? Pumpkin ऐसा बड़े से साइज का होता है ना? कुछ ऐसा pumpkin कुछ ऐसा बड़े से साइज का होता है ना? So pumpkin is what? Pumpkin is heavier than tomato. Now pumpkin और tomato से मुझे एक बात याद आई कि what happened one day. So I'm going to tell you a story now. See what happened. Okay, so this is a playground. ठीक है, ये क्या है? ये एक बड़ा सा प्लेग्राउंड है। नाउ इस प्लेग्राउंड में क्या होता है? ये प्लेग्राउंड किसका था? ये प्लेग्राउंड था टोमेटोज का। ये प्लेग्राउंड किसका था? टोमेटोज का प्लेग्राउंड था। ठीक है। सो व्हाट हैपेंड, तो यहाँ पे क्या था? एक सी सॉ था।
यहाँ पे एक सी सॉ ऐसा बना हुआ था। ये ऐसा एक सी सॉ यहाँ पे बना हुआ था, ठीक है। अब होता क्या था, इस पे टोमेटोज आते थे और सी सॉ पे वो खेलते थे, बैलेंस करते थे, ठीक है। कुछ टोमेटोज इस साइड हो जाते थे और कुछ टोमेटोज इस साइड हो जाते थे और वो लोग इस सी सॉ पे खेलते थे। बट व्हाट हैपेंड वन डे वहां पे, सो व्हाट हैपेंड, दे लव प्लेइंग सी सॉ। One day a big pumpkin comes and sits on one side of the seesaw. What happened? One day what happened? A big pumpkin, a really big pumpkin comes and what happened? Sits on the one side of the seesaw. When it does not get up for a long time, the tomatoes decide to sit on the other side and lift the pumpkin up so that he fall off. तो क्या हुआ भाई, जब वो बहुत देर तक अपनी जगह से नहीं हिला, पंपकिन आ गया। अब टोमेटोज कैसे खेलेंगे, तो पंपकिन आ गया। सो व्हाट हैपेंड, अब टोमेटोज ने डिसाइड किया कि हम क्या करते हैं, हम सारे के सारे, अब देखो हुआ क्या, दिस वाज द सीसॉ। अब हुआ क्या, वो सीसॉ कुछ ऐसा हो गया। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, एक बड़ा सा पंपकिन आके बैठ गया। एक खूब बड़ा सा पंपकिन यहाँ पे आके क्या हो गया, बैठ गया, ठीक है। अब इस साइड पंपकिन बैठ गया। नाउ व्हाट हैपेंड, टोमेटोज ने सोचा कि हम क्या करते हैं, हम इस साइड बैठ जाते हैं सो दैट ये सी सॉ का अदर साइड उठेगा और ये पंपकिन गिर जाएगा। बट क्या ऐसा हुआ, लेट अस सी, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड, The little tomatoes start climbing on the other side. तो छोटे छोटे जो टोमेटोज थे ना, वो क्या करने, ये सारे टोमेटोज थे, ये सारे क्या थे, टोमेटोज थे, ये लोग टोमेटोज हैं, ठीक है। What happened? They started climbing. ये लोग क्या हुए, सी सॉ पे ये लोग क्लाइंब करना शुरू किया। इन्होंने देखो यहाँ पे इन्होंने क्लाइंब करना शुरू किया सी सॉ पे, और यहाँ पे ये लोग आके बैठना शुरू हुए। बट क्या वन टोमेटो एक इतने बड़े से पंपकिन को हटा सकता था? नो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर वन टोमेटो कि वो इतने बड़े से पंपकिन को हटा दे। सो व्हाट हैपेंड लेटर, ये सारे टोमेटोज वन बाय वन क्या हुए, यहाँ पे चढ़ते गए, ठीक है। ये सारे टोमेटोज यहाँ पे क्या होते गए, चढ़ते गए अदर साइड पे। देन मिस्टर पंपकिन, अब क्या हुआ, जब सारे टोमेटोज इधर चढ़ते गए तो नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, अब सीसॉ कुछ ऐसा हो गया, नॉट लाइक ऐसा मीन्स अब क्या हुआ, मिस्टर पंपकिन क्या हो गए, मिस्टर पंपकिन ऊपर हो गए और सारे टोमेटोज ऐसे नीचे हो गए, और फिर मिस्टर पंपकिन अपने उस सीसॉ से क्या हुआ, मिस्टर पंपकिन अपने सीसॉ से गिर गए। सो व्हाट हैपेंड, सारे टोमेटोज ने क्या दिखाई, यूनिटी दिखाई, है ना। अगर वन टोमेटो चाहता कि अकेले वो कर दे तो ऐसा नहीं कर पाता, तो सारे टोमेटोज ने क्या किया, सारे टोमेटोज ने यूनिटी दिखाई। अब जब सारे टोमेटोज ने यूनिटी दिखाई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्राउडी पंपकिन को क्या किया, नीचे गिरा दिया। उन्होंने क्या किया, प्राउडी पंपकिन को नीचे गिरा दिया, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड, सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, फर्स्ट थिंग दैट यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट थिंग व्हाट हैपेंड, ये सारे टोमेटोज ने क्या किया, यहाँ पे जब ये लोग एक के साथ एक यहाँ पे क्लाइंब कर गए तो अल्टीमेटली क्या हो गया, ये साइड हैवी हो गया और ये साइड लाइट हो गया। तो अभी तो हमने पढ़ा था दैट, अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने ये पढ़ा ना कि टोमेटोज जो होते हैं वो लाइटर होते हैं पंपकिन से, राइट। यस, होते हैं, टोमेटोज आर लाइटर देन पंपकिन, बट यू ऑल्सो हैव टू नोटिस दैट दिस साइड देयर इज ओनली वन पंपकिन एंड दिस साइड यहाँ पे क्या है, ढेर सारे टोमेटोज है, यहाँ पे ढेर सारे टोमेटोज है।
तो इसीलिए क्या हुआ, टोमेटोज ने एक दूसरे का साथ दिया, टोमेटोज क्या हो गए, जीत गए. ओके. Okay. Now tell me, now let us move ahead with this concept of lighter and heavier. Now next thing is, how many small tomatoes do you think lifts the pumpkin up? Tell me, how many small tomatoes can lift the pumpkin up? First is 10, 20 और 40. Now tell me kids, according to you, अभी हमने एक स्टोरी बनाई थी ना, अभी हमने एक स्टोरी देखी जिसमें क्या हुआ, टोमेटोज ने मिलके क्या किया, मिस्टर पंपकिन को क्या किया, गिरा दिया, है ना. अभी हमने एक सीसो स्टोरी पढ़ी ना, जिसमें मिस्टर टोमेटोज ने मिलके क्या किया, प्राउडी पंपकिन को गिरा दिया. नाउ आप बताओ, हाउ मेनी स्मॉल टोमेटोज कैन लिफ्ट द पंपकिन अप? कितने सारे छोटे टोमेटो की जरूरत पड़ेगी एक पंपकिन को अपनी जगह से हिलाने के लिए? 10, 20 और 40. सो आई गेस 20 टोमेटोज, अगर हमारे पास ऐसे 20 टोमेटोज होंगे तो वो क्या कर पाएंगे, वो एक पंपकिन को अपनी जगह से क्या कर पाएंगे, लिफ्ट कर पाएंगे, हटा पाएंगे. ओके. ओके. नाउ नेक्स्ट थिंग इज, आफ्टर दिस, नाउ अच्छा, तो अभी हम वेट की बात कर रहे हैं, तो वी मेजर वेट इन किलोग्राम. We measure weight in kilogram and gram. Okay? So हम क्या करते हैं, हम वेट मेजर करते हैं, किसमें मेजर करते हैं, we measure weight in kilogram and gram. तो kilogram is used to measure the heavier object. Kilogram is used to measure the heavier object and gram is used to measure the lighter object. Okay. Kilogram is used to measure the heavier object and gram is used to measure the lighter object. Okay. So here I am going to write something and it will be a fun activity. Kilogram gram, chalk, brick, raisin, then you can take turmeric. Okay, so here I am having different things: chalk, brick, raisin and turmeric. Now tell me, for chalk, you will measure chalk in kilogram or in gram? You will measure chalk in kilogram or in gram. So chalk you should measure in what? Which one of these? Gram. ठीक है, chalk को हम किस में मेजर करेंगे? We measure chalk in gram.
नेक्स्ट इज किलोग्राम. ब्रिक, भाई ब्रिक को किस में मेजर करेंगे? ब्रिक क्योंकि हैवी होता है तो वी विल मेजर इट इन किलोग्राम. नेक्स्ट इज रेजिन. रेजिन मीन्स व्हाट? किशमिश. So resin means kishmish, so that we can measure in resin, you can measure in gram. And then turmeric is also lighter in weight, so you will measure turmeric also in gram. Come on, note down this activity. Okay, so let us do another activity. Now, as we have got some ideas about the kilogram, अब kilogram के बारे में हमें थोड़ा idea लग चुका है. So let us do an activity. Okay, let us do an activity. For that I have to raise this also. Okay. Going to write down some measurements. Acha. So here we are having two columns. One column I am having these objects like suitcase, elephant. Then I am having rice and then resin, then chili. And this side I am having several measurements like 5 kg, 10 kg, less than 3 kg grams and more than 10 kg. So let us match. First option we are here having here is suitcase. तो suitcase क्या more than 10 kg का हो सकता है? क्या normally suitcase more than 10 kg का होता है? No. तो suitcase will match with less than 3 kg. Next is elephant. So as you know, elephant is what? Elephant is a big animal. So elephant can be. Elephant is of more than 10 kg. Next is rice. Rice we can match up to 10 kg. Raisin. Raisins we measure in gram. And chili we can buy up to 5 kg. दो ये ज्यादा है, so let us write less than 5 kg. Okay. Now, so here is a comparative study of the different object and their weight. Okay. Now let us move ahead. Now the next thing we are having here. Let us do one more thing. ठीक है. Next is which of the following measures more than
which of the following measures more than 1 kg or less than 1 kg? Okay, so I am going to write some of the object and you have to tell me whether that given object measures more than 1 kg or less than 1 kg. So I am going to write down the object first. Okay, so here we are having some group of objects like your school bag, geometry box, a big pumpkin and your pair of shoes. So you have to tell me which of these objects is heavier or is more than 1 kg or it is less than 1 kg. So let us start with your book. Okay, now tell me your school bag, not book but bag. Your school bag is more than 1 kg in weight or is less than 1 kg in weight? Your school bag is more than 1 kg or less than 1 kg? So your school bag, as you put all your objects in your school bag, your book, your copy, your pencil box, sometimes your colors also, drawing material, then your water bottle. So I guess your school bag is more than 1 kg. Okay. So your school bag is more than 1 kg. Okay. Next is geometry box. So geometry box. See, tell me. In geometry box, you put several objects. What are the objects? Like your pencil, pen, eraser, and scales. Yeah. Protractor, compass. Now, your geometry box, but still, is it more than 1000? Is it weight more than 1000? I don't think so. So your pencil box is measures less than 1 kg. Your pencil box measures less than 1 kg. Now a big pumpkin. As I have told you recently, I have told you in this class only the story of pumpkin and tomato. So tell me, a big pumpkin can weight more than 1 kg or it will weight less than 1 kg. So a big pumpkin, it will measure more than 1 kg. Now next is your pair of shoes. Next is what? Your pair of shoes. So tell me, your pair of shoes will measure more than 1 kg or less than 1 kg? It will measure less than 1 kg. See, so here we have, what we have done here, we have done a comparative study. So your school bag measures more than 1 kg, your geometry box measures less than 1 kg, your big pumpkin measures more than 1 kg and your pair of shoes, it will measure less than 1 kg. So kids, today we have seen an introduction of our coming chapter. Tomorrow I will continue with this only. Okay, we will meet in the next class.